Morning everybody. Today we will discuss about the Newton's law of motion. Newton law of motion said that F is equal to ma. This is an important equation. Or the net force is equal to the mass times the acceleration. That means it's the product of the mass and the acceleration. This is important work. That is F is equal to ma, where m is the mass, or can be also explained as force is directly proportional to the acceleration, that is F is directly proportional to the acceleration, and when we eliminate this proportionality sign, that lead to be ma, where m is the mass and a is the acceleration. So this has to be remembered. A large net force acting on an object causes a large acceleration. This you have to remember. That's what I said. F is directly proportional to a. If F is greater, that means acceleration is greater. If the force is, that means F is less, then A is also less, as it is directly proportional to A. And when we eliminate this sign, that means this lead to be F is equal to ma. So one has to remember that how the force is exerting. Example, like I can show. Suppose this a force is person is applying, so less acceleration is there. When applied by the two force, then large force, then the large acceleration will take place. What is acceleration? Basically, the acceleration, the rate of change of velocity. That's called the acceleration. Another example I can show, that there is a for differential equation, that is this F is given by F is equal to dma upon dt. That is basically dv, that is the rate of change of acceleration. So rate of change of velocity is the acceleration. This you have to remember. So one has to remember that if the mass is constant, in that case the another formula that's given, just like here is the formula it is given, just like F is equal to m1 v1 minus m naught v1 upon t1 minus t2, where F is equal to ma. This is basically we are calculating here the acceleration, that is the force is applying on a rocket, how the rocket is taking place. Now another example, like plane, it is given again the force, that's what I said, that with the acceleration you can say as F is equal to dv upon dt, this the same acceleration, or you can say as that F is equal to this F is equal to mv1 minus v0, where v0 is the initial velocity, v1 is the final velocity. Similarly, t0 is the initial time period and t1 is the time period we are calculating. Similarly, you can see with the two cars are showing the two position of same car. So f1 f2, that means here v1 is at the v1 the velocity, and v2 v0 is the initial velocity. Time period is t where t where f is equal to m v1 minus m naught v0, where you can say as the mass remain constant, so the m1 is equal to m naught, where v1 is the final velocity and v0 is the initial velocity. So initial time period is t naught and the final velocity, time period is t naught. So we can calculate with the formula by giving this one. आज हम न्यूटन फर्स्ट सेकंड लॉ पढ़ेंगे. न्यूटन सेकंड लॉ हमको क्या कहता है कि जो F इज इक्वल टू ma, यानी कि F जो है जैसे जैसे बढ़ाएंगे, जैसे जैसे F बढ़ाएंगे वैसे वैसे एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा. और ये प्रोपोर्शनल साइन से लगा हुआ है. प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हटा दें तो हमको क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू ma मिलेगा. m इज़ द मास और a इज़ द एक्सेलरेशन. ये आपको बहुत ध्यान रखना है. आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपका लेस एक्सेलरेशन हो तो लेस ही आपका, लेस यानी कम ही आपको एक्सेलरेशन होगा, तो कम ही आपको फोर्स होगा. ज़्यादा फोर्स अगर आप लगाएंगे तो ज़्यादा एक्सेलरेशन मिलेगा. ये इसकी प्रोपोर्शनल साइंस से पता चलता है. ये जो एक्सेलरेशन का मैंने बताया आपको, प्रोपोर्शनलिटी साइन मीन्स कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि एक बढ़ाएंगे तो दूसरा भी ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा. यानी कि मास अगर एफ आप बढ़ा लें तो ए भी बढ़ता चला जाएगा. जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका फ़र्क पड़ेगा. तो ये आपने ध्यान रखना है.
यहाँ एक कई पिक्चरों में दिखाया गया है कि सपोज एक लड़का है, जैसे यहाँ आपको दिखाई दे रहा है एक लड़का है वो फोर्स से खींच रहा है। अगर दो लड़के खींचेंगे डबल एक्सेलरेशन हो जाएगा क्योंकि डबल फोर्स लग रही है। अगर सिंगल फोर्स, तो ये एग्जांपल उसी का है कि जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाएंगे वैसे जहाँ पर देखिए एक लड़का है या दो लड़के, तो फोर्स बढ़ गया तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन भी डबल हो जाएगा। और इस सिमिलरली अगर फिर से आप एक लड़का कर देंगे तो आपका एक एक्सेलरेशन हो जाएगा। अगर आप रॉकेट के केस में देखें, जैसे रॉकेट का फॉर्मूला जो है डिफरेंशियल इक्वेशन में एफ इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी लगाते हैं। और सेम केस यहाँ पर जो है अगर आप प्लेन का देखें तो प्लेन का भी दिखा रखा। पहले वाले में मिसाइल का रॉकेट या मिसाइल बता सकते हैं। इसका फॉर्मूला रखता है एफ इज इक्वल टू एम एक्स वी वन माइनस एम वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी जो है वी वन है, और टी वन जो है फाइनल वेलोसिटी टाइम पीरियड है, और टी नॉट जो है इनिशियल टाइम पीरियड है। तो एफ इज इक्वल टू जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा एफ इज इक्वल टू एम ए। ये आपको ध्यान रखना है। आप और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे यहाँ प्लेन का देख सकते हैं, प्लेन का भी सेम ऐसे ही लगा रखा है एफ इज इक्वल टू डी एम वी अपॉन डी टी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका, और इसे एफ इज इक्वल टू एम ए लगाते हैं। और दूसरे में अगर आप लगाएं एफ इज इक्वल टू वी वन माइनस वी नॉट अपॉन टी वन माइनस टी नॉट, तो ये आपका टाइम पीरियड दे रखा है, तो ये आपको कैलकुलेट करने का काम आता है। आप कार का भी केस में देख सकते हैं, कार की दो पोजीशन दिखाई गई है। एक्स जो है आपका एक्स नॉट है और एक्स नॉट, और ये एक्स वन है। टाइम टी वन पे टी नॉट से टी नो वन पे है, वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। तो वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो ये फार्मूला फिर से वही लगेगा एम वी वन माइनस एम वी नॉट टी अपॉन टी वन माइनस टी नॉट। तो ये आपका हमने सिंपल फॉर्मूला लगाया विच इज़ इक्वल टू एम। अगर कॉमन ले लें तो आप अगर इसे गौर से देखेंगे तो एम कॉमन आ जाएगा, तो हमारा वी वन नॉट माइनस वी टू, सॉरी वी नॉट माइनस वी वन माइनस वी नॉट अपॉन टी वन माइनस टी नॉट हमारा एक्सेलरेशन लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी वीडियो अपडेट्स मिलते रहेंगे। और मेरी ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी तो इसमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।